यूज होगा यहाँ पे, है ना? इफ यू रिमेंबर आई यूज्ड बोथ द इक्वेशन, द रेट लॉ इक्वेशन एज वेल एज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. Okay, so please see, first of all tell me what will be used to get this plot. Am I going to use the integrated rate law equation, or I have to use the simple rate law expression? Tell me. Also look at this particular thing. What is this? Okay, this is R is what, rate, or is it a reactant? A or B? Send the answer in Zoom chat. Which equation I'm going to use, the integrated rate law equation or the rate law expression? Okay, Rifat. Nawal, what do you think? हनीफा, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. Yes. Okay. Then can you please answer whether which one I'm going to use, A or B? You know what is integrated rate law equation, Hanifa? I have done it, but like I'm not sure. Okay. Yes, Rifat, can you explain me why you're saying B? Rifat, can you please turn your mic on? Yes, sir. Why B? Rate law expression? Yeah. What is this R? Rifat, tell me what is this R? Yeah. No, loudly. Look at this reaction and tell me what is this R? And also if Sorry, it was... reactant. Okay, so which equation I'm going to use, tell me? Integrated. A or B? Which one? A. ठीक है रफत, बहुत आप इस तरह की छोटी छोटी, मतलब आई डोंट नो, नो यू आइदर यू डोंट रिवाइज इट वेरी इफेक्टिवली, ठीक है, आप ध्यान लगा के नहीं पढ़ती हैं, आइदर यू आर लाइक विद डूइंग समथिंग एल्स आल्सो व्हाइल यू आर रिवाइजिंग, और यू आर नॉट रिवाइजिंग बाय राइटिंग इट, यू आर नॉट चेकिंग योरसेल्फ. ठीक है, आप चेक कब होता है आपका कि आपको कितना आता है, जब आपसे कोई दूसरा आदमी सवाल करता है. सो यू शुड बी चेकिंग योरसेल्फ, ओके, एवरी टाइम व्हेनेवर यू लर्न समथिंग यू हैव टू चेक इट. कैसे आप चेक कीजिएगा? सवाल देखिए, नया सवाल, ओके, ऐसा नहीं कि जो पुराना सवाल अभी आपने किया सिर्फ फिर से दोबारा से सीखो, उस टाइम तो आपको याद होगा क्या करें, राइट? गेट अ न्यू क्वेश्चन एंड ट्राई टू डू इट. एनसीईआरटी अगर जब तक आप कंप्लीट नहीं करते, ठीक है, आज आपने सारा कुछ कर लिया, एनसीईआरटी का सवाल अगले दिन कीजिए, फिर कितना आ रहा है आपको नहीं आ रहा, फिर 5 दिन बाद कीजिए, आपको कितना आ रहा है नहीं आ रहा, फिर 10 दिन बाद कीजिए आप, then only you will understand how much you are understanding it. Okay, चलिए, so tell me the order for this. If you are having this type of plot, what will be the order? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, दो ही ऑर्डर आपके सवाल में आ सकता है, 0 या 1. यस नवाल, करेक्ट. यस रिफत, करेक्ट. ठीक है, सो फ्रॉम द प्लॉट इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, और ये घबराना नहीं है, हमको क्या पता क्या होगा ऑर्डर, इससे हम कैसे पता करें? नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट, राइट? सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? द ऑर्डर इज इक्वल टू zero order. Okay, and for zero order, what is the integrated rate law equation? Tell me what is the integrated rate law equation, because you have to predict the slope of the curve ना. ठीक है, आप लोग को अगर याद है क्या है slope of the curve, then it is fine. Otherwise we have to write it down. Please tell me what is the equation for what is the integrated rate law equation for zero order? KT equal to A naught minus A. A what? A naught minus A. A naught minus A is equal to KT. ठीक है, now tell me, अब इससे हमको क्या पता चलेगा, slope क्या है? What is the slope of the curve? Okay, so that is why, अच्छा ये वाला इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं ना, लेकिन थिंग इज दैट यू शुड आइदर यू रिमेंबर इट, मेमोराइज इट कि व्हाट इज द स्लोप फॉर दिस, और बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ स्लोप फॉर y इज इक्वल टू mx. ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. कर्व नहीं आ रहा है ना आप लोग को, फिर दिक्कत होगी. y इज इक्वल टू mx प्लस c. चलिए बताइए इस रिएक्शन में y क्या है? इट इज
R, is that right? Yes or no? Please tell me. Yes. है ना? ठीक है. X क्या है? Time, yes or no? Yes, sir. Right. So आपको इस तरह से इक्वेशन को लिखना है कि रिएक्टेंट वाला एक साइड आ जाता है. I'm just writing it like this. A is equal to, okay. Now this is minus A. This will go here. KT will come here. So KT अगर यहाँ आएगा, that will be minus KT plus A naught. Now you can see that this minus K is your M. That is the slope. Okay. So what is the slope here? Minus K is the slope. Got it? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. चलिए ये ग्राफ देख के जल्दी जल्दी बताइए आप लोग आंसर लिखिए इसका. Tell the answer for at least the order of reaction now. Please send the answer on chat. Yes, Nawal, correct. No, Hanifa, I think आपको नहीं आंसर कर पाएंगे अभी because you are not present in the last lecture. You have not seen these graphs, right? Yes, Rifat, correct. Okay. Now please see, if you remember the first order integrated rate law equation, the first order integrated rate law equation was 2.303 log of A naught upon A is equal to KT. But please see here, we have ln R, that means natural log. So this 2.303, when I multiply with this log, it will become what? Ln, right? Ln. Because if you remember, it was ln initially, and then we converted it to log. So ln A naught upon A is equal to KT. Now from here, what you can write? From here, you can write ln A naught minus ln A is equal to KT. Again, the same thing, y is equal to mx plus c. So I should have ln A here is equal to minus KT plus ln A naught. Now again here, what is the slope? Slope is again minus K. Again, if you had the same graph, but it was not with ln, rather it was with log. Okay, so you'll have similar things. Log of the reactant and time, something like this. But in this case, the slope would be minus K upon 2.303. Okay. I hope all of you understand this point, why the slope is changing when we are having log and when we are having ln. Yes or no, please tell me, Nawal and Rifat. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All of you wrote this, yes or no, please tell me. Yes. Okay.
चलिए write a question. If rate constant of decomposition of ammonia is 4 into 10 to the power minus 3 moles per liter per second. Okay. How long will it take to reduce the concentration of NH3 from 0.1 molar to 0.64 molar? Okay. Given all of this information, see what it is asking about. It is asking about how much time is going to take. So whenever they are asking, they are giving you the initial, they are giving you the final concentration, then they are expecting you to calculate the time. Okay, they are expecting you to calculate the time here, right? How long will it take? They've also given you the rate constant. See, so this is something that you have to find, and the remaining 3 are given. So as I said in the last class also, that you will be given 3 terms and 1 term will be asked. So the terms that are that will be given to you will be A naught, final concentration, K, and then T. These are the 4 terms. And out of this 4, you will be given any 3 and any 1 will be asked. Okay, linear equation in 180, one variable. First thing you have to do is identify what type of reaction is this. Is this first order? Identify order of reaction. First of all, send me in the chat what is the order of reaction. और आपकी क्लास आप केस सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, 0 और 1. Please tell me first order or 0 order reaction. Yeah, Rifat, that is correct. Rifat, also can you please send it? Okay, Nawal. Hanifa, what do you think? What is the order of reaction? Is Hanifa here? Yeah, she's here. Nawal, can you tell me? Okay. Nawal, can you please write in chat, how did you find what is the order of reaction? एक आपको कैसे पता है कि order क्या होगा? Also, Rifat and Hanifa, can you please tell me? What information in the question told you about the order of reaction? I'm expecting answer from everyone. Yes, what happened, Nawal and Hanifa? Please tell me fast now. Nawal, can you please speak up? Nawal, आप बोलिए. I thought from the unit it would be 0. Units of what? Mole meter per second. Okay, unit of what is that thing? Mole liter नहीं, उसको क्या बोलते हैं? नाम क्या है उसका? This whole term is known as unit. rate. अरे ये यूनिट नहीं है. यूनिट किसका यूनिट है? किस चीज का यूनिट है हनीफा? The रेट का यूनिट है
आप लोग की टर्मिनोलॉजी सही नहीं है, आप लोग की किताबों से वास्ता नहीं। रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे और आप रेट बोल रही हैं। हनीफा प्लीज बी लाउड अ बिट। इट इज द यूनिट ऑफ व्हाट? The rate constant. Correct. Okay. What about Nawal? How did you come to know about the order of reaction? Because of the rate constant. Rate unit of the rate constant. What about you, Rifat? How did you come to know about the order of reaction? Yes, Rifat, please speak. Yes, sir. I actually looked at the 0.1 to 0.6. Here. Yes. क्या बोलता है ये? How then why you have said it as like from this? How did you came to know that what is the order? Sir, I wasn't sure, so How many ways are there to get the order of reaction? Tell me. Have I ever told you like look at the concentration and you will get the order of reaction? Rifat, tell me. no, sir. No, no. There are only two ways. Not two ways. There are rather three ways I can say by which you can tell the order of reaction. First one is unit of the rate constant. Remember this. Note it down if you are not writing anything. आप लोगों को याद नहीं रहता तो लिखिए जितनी बार हम बोलते हैं ये सारी चीजें. ठीक है? Unit of the please repeat after me. Tell me unit of what? Complete the sentence. Unit of rate constant. Unit of rate constant. आप लोग को नहीं बोलना है. हनीफा नवाल. Unit of rate constant. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा. जैसा टेबल मिलता है जिसमें हम लोगों को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन दिया रहता है रिएक्टेंट का, देन वी गेट द रेट ऑफ रिएक्शन, देन फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट व्हाट आर द कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड एक्सपेरिमेंट, एंड देन बाय डिवाइडिंग दोस equations we get the order of reaction. So first is unit of rate constant. The second way by which we can tell the order of reaction is by experimental data. What is the second method? Tell me. Experimental data. Okay. Third is the mechanism of reaction. Last class में आप लोगों ने देखा, looking at the mechanism and the slowest step. If we know the mechanism and the slowest step in that mechanism, we can tell what is the order of reaction. So what is the third method? Mechanism of reaction. Mechanism of reaction. Okay, fine. Now all of you turn your mic on and tell me what are the three ways by which we can tell the order of reaction. Unit of rate constant, experimental data, mechanism of reaction. Okay, now there is also one more way which is kind of obvious, that is why no one writes it. That is if you have been given the rate law expression. For example, rate is equal to k. What is the order of reaction? Tell me. If rate is equal to k, what is the order of reaction? जोर से बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही किसी की. 0. Rate is equal to k into a to the power 1, right? So this is here order is equal to 1. Now this is very obvious, that is why no one teaches this. ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीका, अगर आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है तब भी आपको मिल सकता है. एंड ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा लोग भूल जाते हैं इसको. When rate is equal to rate constant, the order is equal to 0. ठीक है. Now the first thing is what? The unit of rate constant. Unit of rate constant. So what did I say? How to calculate the order of reaction? Tell me for unit of, from the unit of k. Order is equal to, क्या बोला था हमने? कैसे बताएंगे, बताइए यहां से. हनीफा टेल मी. हाउ विल यू से? क्या मेथड था? हमने लिखाया है एक लाइन. आई रोट ना. I've dictated one line how to calculate the order from the units of k. Yes, Hanifa. No idea. Yes. जोर से बोलिए. आप मम्बल क्यों करती हैं आप? ठीक है ना, बात तो कीजिए सब कम से कम सही से. स्पीक लाउडली. यस हनीफा. नो आइडिया. No, sir. No. Nawal, what do you think? How to calculate? तो हनीफा प्लीज flip some pages back and see जहां हमने इस पोर्शन को कराया है. How to get the order? Nawal, you tell me how to get the order from units of k.
By writing down the units. By writing the units. Please keep your mic on if I'm talking to you. Yeah, tell me. By writing the Units. units को लिख दें बस हम, और कुछ नहीं करना है. No, we can divide it. तो इसको नहीं, please keep your mic on, Nawal, when I'm speaking to you. Yes. Now tell me. What to do? We can divide it by mole per liter. ये बताया है हमने, ऐसे बताया है हमने. You're going to do this every time. हमने नहीं बताया कुछ आसान तरीका? Sir, I don't remember. Rifat, what about you? How to get the order? आप लोग रिवाइज कीजिएगा तब आप लोग को याद रहेगा ना. क्या है ये नोट? कब पढ़ते हैं आप लोग? क्या करना है बताइए? Speak, guys, speak. To get the order of reaction, what we need to do? We have to add 1 To what? to To what? liter. Keep your mic on. कोई भी है, अगर आप मतलब प्लीज एक बार प्रॉपरली उसको बोल तो दीजिए. माइक ऑन ऑफ करने में इतना आप लोगों को क्यों रहता है? कीप योर माइक ऑन. नो वन विल टर्न देयर माइक ऑफ. कीप योर माइक ऑन ऑलवेज. हाँ हनीफा, कीप योर माइक ऑन. हाँ, टेल मी व्हाट वी नीड टू डू. We have to add 1 to L into unit rate constant. We need to add 1 to L. the power of L. Yes. What is the power of L? Minus 1. And what will happen if I add 1? 0. What is the order of reaction? 0. Keep your mic on. No one will turn their mic off. Mic off कीजिए, हम क्लास बाहर भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है? फिर refer. Yeah. What is the order of reaction now? Tell me. 0. 0 order reaction. What is the integrated rate law equation for 0 order reaction? Kt equal to A naught minus A. Kt is equal to A naught minus A. Now look at the question and tell me, is the rate constant given? Yes. Yes, sir. Is the initial concentration of NH3, that is my reactant, given? Yes. Yes. Is the final concentration of A given? Yes. 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 Can you calculate it? Yes. Can you calculate the time now? Please calculate the time. You're not hearing the term of the power of L plus 1 for the first time. Yes or no, please tell me. Are you hearing this for the first time? No. No, no. You recognize that when I said power of L, right? Nawal, keep your mic on. Yes, sir. Yes, all of you recognized it. Yes. अफसोस हुआ आप लोगों को कि याद नहीं था इतनी छोटी सी बात. You don't want to have these regrets after you come out of an examination hall in the 12th board examination. ठीक है? You will recognize everything. ठीक है? लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है अच्छा ये तो पढ़ा है हमने. फिर आगे बढ़ते हैं अच्छा ये भी तो हमको आता ही है ना, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना उसको सिर्फ देखा है, उसने 10 बार देखा हुआ है. You have never practiced it. That is why आप लोगों को नहीं आ रहा है. Okay, so please keep on practicing. और प्लीज हैव गैप्स इन योर प्रैक्टिसेस. ओके, आप आज अगर पढ़ रहे हैं तो कल अपने आप को टेस्ट कीजिएगा ना. एक रात में सारा सिलेबस तो कंप्लीट करके आप वहां पे एग्जाम दे नहीं सकते सारा सिलेबस कंप्लीट करके, राइट? एक रात के अंदर. तो टेस्ट और योरसेल्फ विद गैप्स. आज आपने पढ़ा, कल टेस्ट किया, फिर 2 दिन बाद टेस्ट किया.
But even if you have the same questions 2 days later, 3 days later, 10 days later, that's not an issue. Okay. हाँ, अब ये चीज है कि एक सवाल लेके मत चलिएगा, हर एक ही सवाल को अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं. You have 10 questions on one topic. Test yourself on those 10 questions after you have learned the topic. Then the next day, then after 3 days, then after 10 days, then after 15 days, like this. Okay. Then only you will understand and तभी आप लोग की retention बढ़ेगी. Otherwise आप लोग को सब चीजें familiar लगेंगी, कुछ चीज आप लोग को याद नहीं रहेगा सही से. बात मानिए, अभी से स्टार्ट कीजिए कि लास्ट टाइम, अब जैसे आज क्लास हो गया तो लास्ट हफ्ते में जो भी प्रॉब्लम्स कराए थे आज उनको आप करने की कोशिश कीजिए, फिर से आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका लास्ट वीक पूरा वेस्ट गया है. ओके, तो प्लीज स्टार्ट इट राइट नाउ. रूटीन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, कब पढ़ना है नहीं पढ़ना है. 15 मिनट निकालिए, 10 मिनट, जब भी टाइम मिले पढ़िए अब. ओके, अभी टाइम है आपके पास इवन रूटीन्स बनाने का, नहीं तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ रटते रह जाइएगा और कुछ नहीं कर पाइएगा. प्लीज सेंड द आंसर व्हेन यू आर डन. And also, like at the end, you will keep in mind the units of different things so that you get the time in what unit you have to also write the units for that. Okay. Whatever you are getting the answer for any term, either the concentration or the time or the rate constant, you should write them with the unit. Yes, Hanifa, correct, very good. Waiting for Nawal and Rifat. Hanifa, are you part of the chemistry group? Are you part of any WhatsApp group for chemistry? Yes, sir. Yes, you're a partner. You got the link for DNS blog lecture and also the notes and highlighted NCERT. Yes, sir. I got it. Okay. Rifat, you have sent the answer here. Rifat, that is wrong. Can you please recalculate? I think the value is it right. Just a second. Oh, sorry. This will be 0.064. Okay. Rifat, just change that. That's my mistake. Just change that. Okay. You get the right answer. I think Nawal, you also calculates using the same things. Yeah, Nawal, just change that.
will be 0.1 minus 0.064. Or else you would be getting a negative value. I think Hanifa, how did you calculate then? I got the negative value, but like I didn't take it. Okay. Can you send the answer, Hanifa? How you have done? Okay. Yes, Hanifa, can you send the answer? आपने लिख लिया ना इसको? Yes, sir. Naval, now it is correct. Very good. Okay, so you will get the time as 9 seconds for this case. Write another question. The value of rate constant is 60-second inverse. Hanifa, please send the answer. In what time? आपने भेज दिया क्या? हमको रिसीव नहीं हुआ अभी तक. I have. अच्छा. It happens sometimes with your WhatsApp. Okay. 60-second inverse in what time? Five grams of reactant will get reduced to 3 grams. First of all, tell me what is the order of this reaction? Yes, guys, what is the order? First order. Yeah. Why does first order? Because liter is to power 0. Liter power 0, that means it is 1, right? Don't have any liter term here. So liter is to the power 0 plus 1, that will give you order 1. What is the integrated rate law equation for this one? 2.303 log A naught by A equal to KB. Log A naught by A is equal to KT. So what term we have? What the value of rate constant? Time we need just the time, right? So time will be equal to 2.303 divided by the rate constant of K log A naught upon A. चलिए कैलकुलेट कीजिए टाइम कितना होगा? We have done log already. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Values याद है आप लोगों को log के या नहीं याद है? Yes. भूल गए? याद है? ठीक है.
plug in the values, and then also please write the answer in terms of like whatever proper unit is there. Okay, units को mind में रखिएगा please. Now also one more thing देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ ग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे प्लीज आप एक बार सुन लीजिए. We have here concentration upon concentration, ठीक है? So I can write this as n naught upon volume divided by n upon volume, right? Because this is what molarity. Molarity is number of moles upon volume. So initial number of moles, because volume is not changing. When we are having the reaction in the same container. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Right? Okay. Now see, if n naught upon v, है ना? अब तो v और v को cancel कर सकते हैं हम लोग. Yes or no? Right? So the concentration of A, I can write A naught upon A. I can also write it as n naught upon n. Clear सबको? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Similarly, for n naught upon n, what is n? Number of moles is equal to the given mass by molar mass. So now the given mass is going to change, and molar mass is going to be the same for the same reactant, because reactant ही तो है ना? तो reactant की molar mass तो change नहीं होगा, बस जो mass present है वहाँ पे that will change. So V naught upon the molar mass, and also I can cancel this m, the molar masses, and I will get this as W naught upon W. So this is the initial mass of reactant, and this is the final mass of reactant जो आपको दिया हुआ है. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Please. You just need to plug in the values here, nothing else. ठीक है? Hanifa, you did not get the actual answer. हनीफा आप क्या चाहिए आपको? पुराना वाला है. ओके ओके, हम सही सोच रहे हैं आपने क्या किया है. दैट्स ओके हनीफा, नो प्रॉब्लम, माय बैड. अभी आपका मैसेज आया. ओके, अरे फर्स्ट
Sir, Yeah, tell me. will the values of log be given? Maybe or maybe not. Okay, you cannot rely on them. Generally they are given, ठीक है, but again you cannot rely on them. ना, और आपको तो सिर्फ 4 याद करने हैं ना? कौन से 4 याद Yes. करने हैं आपको? 2, Log 3, 5, 7. Yeah, log 3, log 5 and log 7. Okay. यहाँ पे 3 और 5 का ही बस काम है. You got the answer, yes or no, Sunny? Yes. What's the answer? It needs some calculation, but you will get somewhere around 8 into 10 to the power minus 3 seconds. Okay. Ten to the power minus 3. I think so. 10 to the power minus 3. Is anyone getting like this? 2.303 divided by 60 second inverse. Second inverse का भी छोड़ देते हैं. Second inverse ऊपर जाएगा, second हो जाएगा. Into 0.22, right? Yes or no? This is log 5 minus 3. Is anyone getting this value? Yes, sir. Yes, no? So that will come out to be 8 into 10 to the power minus 3. लेकिन आपको calculation पूरा करना है exam के time, ठीक है? Okay. This is a question in which you are not given concentration, but you have been given the masses. Okay. Your approach is still going to be the same because the ratio of concentration is equal to the ratio of number of moles, and it is also equal to the the ratio of the weight. Right? Another question. What about Rifat and Hanifa? आप लोग ने कहाँ तक किया था? आप लोग को ये वैल्यू मिली कि नहीं मिली? 2.303 into 0.22 upon 60 seconds. Yes, Rifat, please tell me. Yes, sir. I got that final value. So you got the final value. Hanifa, what about you? I'm still calculating. Still calculating what? Log a naught upon a तो तुरंत हो जाएगा ना कैलकुलेट, अगर आपको वैल्यूज पता है तो. log 3 की वैल्यू 0.48, log 5 की वैल्यू 0.70. इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0.22 है ना. और तो कुछ हमने किया ही नहीं सर, सिर्फ वैल्यूज को प्लग इन किया. कैलकुलेशन बस इतना ही करना था आपको. ओके, इफ यू आर गेटिंग दिस वैल्यू देन इट इज फाइन. राइट, नेक्स्ट. Sir, I'm getting something like 0.0083. हाँ, तो ये वही हो गया ना, 0.008 सेकेंड्स, राइट. हाँ रिफत. Yes, Rifat, what are you getting? Yes, sir. Same चीज है ना, 8 into 10 power minus 3 या फिर 0.008. 8 into 10 minus. Yeah, what happened? Everything fine now? Yes or no? Yes, sir. अच्छा, so you are getting, sir, I am getting this. हमको लगा कुछ चलिए. Write another question. The value of rate constant. The value of rate constant of a reaction is 3 into 10 to the power minus 3 minute inverse. Calculate the time required. Calculate the time required for 75% consumption of reaction. Wait, consumption मतलब कि completion लिखिएगा, sorry. Okay, so एक तो आपने weight का देख लिया, एक देख लीजिए जब आपको percentage में दिया रहे तो. How are you going to approach this particular problem? Again, first of all, tell me what is the order of reaction?
First order. How much? First. First order reaction. Okay, now please see. 75% completion of the reaction. Okay, please listen. Don't write anything. Keep your pen aside. Please listen very carefully. I have a reactant A and it is giving me product B. Okay. Initially, I will have 100%, right? And how much is reacting? Reacted completion का मतलब क्या हुआ? 75% reaction complete हो चुका है. 75% of the reaction will be completed only and only when 75% of reactant has been consumed. So 75% of reactant is reacted. So this is my reactant. And what is the remaining for final? Final concentration is equal to how much? 25. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. So you have got the initial, you have got the final. Okay, that's the only thing that you needed. Again, the same thing. You need to calculate time. So time will be equal to 2.303 divided by K log of A naught upon A, right? So this will be 2.303 divided by K log of what is A naught? A naught will be initial was 100. Okay, 100 divided by what is the final? 25. So this is 2.303 divided by 3 into 10 to the power minus 3 log of 25 forza, and this will be in terms of minute because here we have minute inverse. It will go above, it will become minutes. Okay, so we'll get the time in terms of minute. We'll get this as 2.303 into what is the value of log 4? What is the value of log 4? What is the value of log 2? 0.30. 0.30. So double कर दीजिए है ना? That will become log 4. So it will was 0.6, right? Divided by 10 to the power minus 3. Minus 3 will go above. It will become plus 3 and divided by 3. Okay, so this will be 0.3 now. We'll get this as 2.303 into 0.3 into 10 to the power 3. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? Write this as 3 to the 6 point, it is a 909 into 10 to the power 2 लिख सकते हैं, right? Is no? Oh, sorry, my bad. एक second, my bad. It will be 0.2, not 3. 3 से यहाँ 0.2 होगा. So this will be 4.606 into 2 से multiply किया हमने, तो 10 to the power 2 हो जाएगा ये. 8 minutes. This will be 460.6 minutes. In the question they have given in terms of minutes. You can just calculate in terms of minutes and just leave it as it is. Question में जो unit है उसी unit को ही लिखने की कोशिश कीजिएगा. Please write. I mean, you have written the question. Yes or no? Please tell me. Yes. Yes, sir. Okay. Wrote the answer. Wrote the answer. Yes or no? No, sir. No. अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए. एक ही आदमी का आवाज आता है. No, sir. You can write it on your own. खुद से कर लेंगे. Yes, sir. हाँ ठीक है, कीजिए खुद से. कीजिए. Okay, I'm giving you just 2-3 minutes. Try to do it. Then we'll look at next question. Okay, also one more thing, next Saturday I may not be taking the class. Okay, next Saturday may not be taking the class. I'm not really confirm about it.
Done, sir. Done? Okay. Right, another question. See, this is another type of question, okay? So we have seen one question in which you have been given the concentration दिया रहेगा, तो you can just plug in, right? Plug it in the equation. You have seen in one question, they have given the weight. Second question इसमें हमने देखा, इसमें उन्होंने percentage के हिसाब से बोला है. Now look at the third question. A first order reaction takes 20 minutes for 25% completion. Okay, takes 20 minutes for 25% of completion. Okay, calculate the time when 75% of reaction will be completed. Okay, so first difference that you are going to see here, they have told you what is the first order, that is what is the order of reaction. So that is not your concern now. The missing part, if you see here, there are four different terms here: the rate constant, the initial concentration, final concentration, and the time. Okay, in this case you can see that now whenever it is in percentage, we know that the initial concentration will be how much? Tell me guys. जब भी percentage की बात होगी तो initial concentration कितना लेना है? What will be the initial? It will be 100. Okay, so this has been given. आपके पास ये A भी दिया हुआ है आपको. It is also given, right? Even if you see the time is not given. See, for the second case, the time is not given and the K is also not given, right? Calculate the time when 75% of the reaction will be completed. But so you don't have two variables, but they have given another case. This was the second case. Okay, this is for 75% completion. So remaining will be 25%, correct? And then there is another case in which you have K, A naught, A, and time. In the first case, first order reaction takes 20 minutes. So time is given 20 minutes. The final concentration is for 25% completion. 25% completion है तो final reaction कितना बचेगा बताइए? How much reaction will be there? Loudly? 75% reaction will be there. A naught आपके पास same है 100, right? So from here you have been given three things. You need to calculate the value of K from here. Then you need to plug in this value of K in the second particular portion. All of you got it? Yes or no? Please tell me. Once you get the K, you can easily calculate the time. ठीक है, सबसे पहले K कहाँ से मिलेगा आपको? पहले वाले इक्वेशन से. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes. Yes, sir. Right. So first of all, you will write number 1 for 25% completion. Now I have to calculate for what? I have to calculate for K. So I'll write K is equal to 2.303 divided by time log of A naught upon A. Okay, so please calculate this value and tell me what is the value of K. It is taking how much? 20 minutes. So this can go 25, 3s are 25, 4s are. So it is nothing but it is log 4 by 3, or we can write log 4 minus log 3, right? So please calculate this one real fast. All of these are what? Previous year questions. Okay, please remember that.
3 पॉइंट नहीं रिफत, कुछ गलती है देखिए, 1 से कम होगा ना वैल्यू, because here in the denominator we have 20, this is 20 na, 2.303. What is this value here? Log 4 minus log 3, Rifat? 0.28. 0.28. 0.28. फिर से देखिए, सब्ट्रैक्शन में आप मिस्टेक कीजिएगा। log 4 is equal to how much? log 4 is equal to 0. log 3 is equal to Log 3 is equal to 0.48. सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको। कितना आ रहा है रिफत? सब्ट्रैक्ट करने में प्लीज बताइए। Zero point two 0.28। हाँ रिफत, ठीक से कैलकुलेट कीजिए आप, सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कीजिएगा। 28 only? Yes, sir. I got it. जी बताइए कितना आ रहा है रिफत? Fast. Others, you can please send the answer in chat if you have calculated for K. Also, one more thing, if you are not going to have a class on Saturday, you will have a test on Saturday. Okay. आज जो भी जहां तक आज हम कराएंगे वहां तक का आपका टेस्ट होगा। Hanifa, no, that's not right. Actually, it will be even less than that. कितना आएगा यहाँ पे रिफत? आप इसका आंसर नहीं दीजिएगा क्या? जल्दी बोलिए। What is 0.6 minus 0.48? Yes, Rifat? Rifat, I'm asking you something now. Yes, sir. Tell me, what is the value? 0.6 minus 0.48. So 1 second. 1 second. सब्ट्रैक्शन में आपको हम 100 होमवर्क दे देंगे सब्ट्रैक्शन का, 8 क्लास के 8 स्टैंडर्ड का किताब निकाल के। जल्दी बताइए। Sorry, sir. I'm still getting 0.12. आपने 0.28 बोल रहे थे ना आप तो? नहीं सर, उसके बाद 0.1. आप जोर से बोला कीजिए, साफ साफ बोला कीजिए, ठीक है? ठीक है, now it is fine. We'll get this as 0.0138 minute inverse, and you can take this as 0.014. Okay, minute inverse. Okay, first thing is that अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, this is only for 25% completion. For 75% completion, we need to calculate the time. Time will be equal to 2.303 divided by
The K value that we have got is, we can write this also as 14 into 10 to the power minus 3 minute inverse. Okay, 14 into 10 to the power minus 3 log of initial concentration is 100. What is the final concentration? Please tell fast. Final concentration is, what is the final concentration? For 75% of कितना? फिर से बोलिए जोर से. 25. 25. Very good. Okay, so this will be equal to 2.303 into 10 to the power 3 into log of 4 divided by 14. ठीक है, you will get this time as around 106.29 minutes. ठीक है, please calculate this. Please इसको calculate कर लीजिएगा. Okay, so I hope you have got an idea about these type of questions. Write another question in which you will be given in terms of fraction. Fractions and percentage are very similar, but please write this question. ठीक है, पहले देखिए सवाल को. Rate constant of a first order reaction is 60 second inverse. Okay, यहाँ पे आपको ऐसे भी बोला जा सकता था सीधा, the rate constant for a reaction. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी बोलते तो सेकंड इनवर्स से पता चल जाना चाहिए that it is a first order reaction. Okay, first thing is that rate constant for a first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/10 value? ठीक है, how much value? 1/10 value. So please see here what I can take. Initial आप ले लीजिए इसको 10, फाइनल ले लीजिए आप 1. तो 10 से 1 हो गया, दैट मींस दिस फाइनल कंसंट्रेशन इज व्हाट? 1/10. यस और नो प्लीज टेल मी. बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना बोलिए. Yes, sir. ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल ले लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग. गॉट इट? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. Everything else will be same, nothing will change. You have just same things here. T is equal to 2.303 divided by K log of A naught is 10 divided by A, that is 1. So log 10. So this will be just 2.303 divided by K. अगर आपके पास इस तरह का सवाल हो, but fractions है, लेकिन it is talking about the concentration of reactant. Okay, it is talking about the concentration of the reactant. Okay, now look at another question of percentage that is very important. See here. For a first order reaction, show that the time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90%. ठीक है, so for both of these things, what we need to calculate, we need to calculate the time. Okay, we need to calculate the time. So we'll do two things. First of all, we'll do for 99% completion. So number one, please see, don't write, for 99% completion. Tell me, A naught is equal to how much? Initial concentration is 100. 100. परसेंटेज में जब भी होगा जोर से बोलिए और आप लोग. ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन अगर 99% कंप्लीट हो चुका है तो कितना बचा? 1. वेरी गुड. नाउ टाइम विल बी इक्वल टू, प्लीज स्पीक. टाइम इज इक्वल टू, किया अभी हमने 3-4 बार किया ना सवालों को, जल्दी बताइए. Time is equal to, flip some pages, look at the questions that we have done. Time is equal to, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है. 2.303 by K log A naught by. Very good. 2.303 K log A naught by A. What is the A naught value here? 100. 100 divided by 1. So this will be equal to, time will be equal to 2 times 2.303 है ना. log 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी. ऐसे देख लीजिए आप लोग. 2.303 divided by K log 100 की वैल्यू 2. Got it? Yes or no? Please tell me. This is T 99%. Okay, this is T 99%. बहुत ही सिंपल है ये वाला. ठीक है, you don't need to calculate anything. For 90% completion, what is the A naught? A naught is 100. And what is the A final concentration? 10.
10. So T will be equal to 2.303 divided by K log of 100 upon 10. So 10 and 100, they will cancel each other. 10 tens are 100 and log 10 is nothing. Log 10 is equal to 1. So T of 90% is equal to 2.303 divided by K, right? So as you can see very completely here, T 99%, I can write this as T 90% की value और ये 2.303, it is same. So T 99% is equal to 2 times T 90%. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है? Can you write this down? लिख लिया आप लोगों ने? सुनो प्लीज सनी. Yes, sir. Right, next topic डालिए. Half life period. Okay. So please write this first of all. What is half life period? The time required for %50 completion of the reaction is called half-life period. Okay, or the time during which initial concentration of reactant was reduced to half is called half-life period.
डन? यस नो प्लीज मी लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Right, next, first of all, we'll see the half-life period of zero order reaction. The only thing you have to remember is that, बहुत आसानी से समझिएगा इसको, ठीक है ना? For what is the time taken for 50% of the completion of reaction? That means if I'm starting with 50, मेरे reactant को 25 होने में कितना time लग रहा है? If I'm starting from 120, मेरे reactant को 60 होने में कितना time लग रहा है? Okay, so please write zero order reaction. For this zero order reaction, what is the rate integrated rate law equation? The integrated rate equation is equal to, not equal to मतलब कि यहाँ पे it is a naught minus a is equal to kt. A naught minus a is equal to kt. ठीक है? अच्छा, if we are going to calculate the half life, then first of all time को हम लोग कैसे लिखते हैं? We'll write the time as t half. Okay, at t half the initial concentration will be same. Initial आपका क्या रहेगा? A naught ही रहेगा, right? But listen, at the final concentration, this is very important. Final concentration जो हम लेंगे, that we will take this as a naught by 2, right? Because आधा हो गया. Got it? Yes or no, please tell me, guys. Okay. Now please Yes. see. We need to calculate the time, right? So t half will be equal to a naught minus this concentration. The final concentration is now what? A naught by 2 divided by k. Is that right? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay. Now, if you want to take the LCM, you will get that 2a naught minus a naught divided by 2 whole divided by k, right? And you will get this 2a naught minus a naught will be equal to what? 1a naught, and this 2. Denominator of numerator is denominator. So you will get a naught upon 2k. This is the t half. All of you got this? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay, you will remember this. This is the t half of zero order reaction. ठीक है? देखिए आप लोग क्या करेंगे ना? They will give you the t half, they will give you the initial concentration और rate constant आपको नहीं देंगे, ठीक है? और उसका बोलेंगे कि initial concentration से इतना होने में मतलब कितना टाइम लगेगा. So they will give you the t half, initial concentration. They will ask you the time taken for let us say 90% completion. ठीक है? t half देके. So you have to take in the consideration that t half से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? Rate constant निकाल सकते हैं. Okay, please keep that in mind. लिख लिया आप लोगों ने? Yes or no, please tell me. Yes. लिख लिया? Okay, please see. Now we'll look for plot for t half versus the initial concentration. If you are having initial concentration, how the half-life of zero order reaction is going to change with respect to the initial concentration. ठीक है? तो बताइए यहाँ पे x एक्सिस में किसको रखेंगे? क्या चेंज हो रहा है? a नॉट चेंज होगा x एक्सिस में. a नॉट के चेंज होने से क्या चेंज होगा? t हाफ चेंज होगा, राइट? सो दिस इज इन द y एक्सिस. सो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू mx जैसा केस बनेगा. सो अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना? अब बताइए ग्राफ कहाँ से पास करेगा? मतलब ओरिजिन से पास करेगा या कहीं और से पास करेगा? बड़ा टाइम लगा रहे हैं आप लोग. ग्राफ सही नहीं है आप लोगों का. थोड़ा ध्यान हमको पता नहीं कुछ करना पड़ेगा ग्राफ का आप लोगों के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y आपके पास, प्लीज राइट दिस, स्लोप इज इक्वल टू 1/2k. ठीक है, अब इसको लिखिए. सर, कुछ हम करते हैं. जी जी बताइए. ग्राफ आल्सो एग्जाम में पूछ सकते हैं. क्या? ये ग्राफ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. हाँ, ग्राफ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. बोल देंगे कि ये ग्राफ जो है किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, स्लोप क्या है इसका, पिछले वाले की तरह. ठीक है, ग्राफ आना चाहिए नो मैटर, मतलब आपको मतलब चाहे सवाल पूछे नहीं पूछे, ग्राफ आना चाहिए. ठीक है, साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में आ गए, यू शुड अंडरस्टैंड द ग्राफ्स एंड एटलीस्ट 2 और 3 लाइन के इक्वेशंस आपको आने चाहिए. ठीक है,
आप लोग भी ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ रिसोर्स मिल जाएगा जहाँ से आप लोग को पता चल जाए कि ग्राफ किस तरह का होता है. ओके, wrote this, yes or no, please tell me. Yes. Right, next, first order reaction. First order reaction. Okay, now for first order reaction, the integrated rate law equation is T is equal to 2.303 divided by K log of A naught upon 8. Okay, so again, when we are going to calculate the T half, so T will be equal to T half, the A naught initial concentration will be initial concentration, the final concentration will be A naught by 2. यहाँ तक clear है सबको? Yes or no, please tell me, guys. Yes, sir. Now T half will be equal to 2. Please see, अभी मत लिखिए. 2.303 divided by K log of A naught upon A naught by 2. Correct, guys? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Okay. Now this will be equal to, now A naught and A naught will cancel each other. This denominator of denominator is numerator. So we will get 2.303 divided by K and log 2. Got it, guys? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Now log 2. What do we have? ln2 की value. Okay, so this will come out to be, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, log 2 की वैल्यू से 2.303 को मत मल्टीप्लाई कीजिएगा. Why? Because this is an approximation. जब बोलते हैं ना आपको log 2 is equal to 0.30, this is an approximation. आपको ये पता है 2.303 into log of A, it will be equal to ln of A, है ना. So basically I can write this as natural log of 2 divided by K. This will be the T half. Okay, ln वाला पार्ट समझ में आया आप लोगों को? yes or no, please tell me. Yes, sir. ठीक है, और ln2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइड बाय K. यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा है ना कि व्हाट दे विल गिव यू, दे विल जस्ट गिव यू द T हाफ, और आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देंगे वो लोग, ठीक है. दे विल जस्ट गिव यू द T हाफ एंड दे विल एक्सपेक्ट यू टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट यूजिंग द T हाफ. ओके, प्लीज राइट दिस वन आल्सो, and then you are going to write a note. T half for first order reaction. ये देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताइए. इज इट डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन? Yes. कहाँ है इनिशियल कंसंट्रेशन? तो है ही नहीं यहाँ पे, देखिए ए नॉट नहीं है ना. जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? ए नॉट का तो टर्म ही नहीं है. देखिए पुराने वाले इक्वेशन में ए नॉट था. ओके, ए नॉट बाई 2 के. हियर वी डोंट हैव एनी ए नॉट टर्म. So T half for the first order reaction is independent of initial concentration. And right next, plot of T half versus the initial concentration. Now since it is independent of the initial concentration, A naught and T half. So T half does not depend on the initial concentration. That is why no matter what the initial concentration is, T half will be the same. ठीक है.
ए नॉट की वैल्यू कुछ भी हो, टी हाफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट विल बी द सेम। लिखे आप लोगों ने SNOP सुनी? यस सर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से आप लोग को एक इंसाइट मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द initial concentration of reactant. Second thing is that you're going to write see T half for first order reaction is independent of initial concentration of the reactant. ये तो लिखिए, एक सेकंड इस एक सेकंड T half for first order reaction is first order reaction only depends on the rate constant. Okay. देखिए आप लोगों ने, अब देखिए एक सवाल लिखिए, T half for a first order reaction is 2 minutes. Calculate the time taken. Calculate the time taken for concentration of reactant A part, concentration of reactant yeah, for the first order in the reaction, calculate the time taken for concentration of reactant getting reduced, getting reduced from 32 moles per liter to 16 moles per liter. Okay, ठीक है। First of all, getting reduced from 32 moles per liter to 16 moles per liter. बताइए कितना टाइम लगेगा इसको? टी हाफ क्या है आपके पास? 2 मिनट है ना, तो कितना टाइम लगेगा आधा होने के लिए? Tell me guys. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ
टी हाफ क्या होता है? स्टिल राइटिंग द क्वेश्चन क्या? ऑल ऑफ यू डन राइटिंग द क्वेश्चन, यस और नो? Yes. यस ना? तो बताइए फिर यहाँ पे एक रिएक्शन के लिए टी हाफ है 2 मिनट। हमने स्टार्ट किया 32 मोल्स पर लीटर से 16 मोल्स पर लीटर, आधा हो गया, कितना टाइम लगेगा? 32 से कितना टाइम लगेगा? 1 minute. 1 मिनट लगेगा। अरे टी हाफ जब 2 मिनट है, टी हाफ का डेफिनेशन ही है कि आधा होने के लिए हमारे पास 2 मिनट लगता है, तो कितना मिनट लगेगा आधा होने के लिए? 2 मिनट। 2 minutes. ठीक है, टी हाफ क्या है आपके पास? 2 मिनट से, तो आधा होने के लिए टी हाफ सेम टाइम ना। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए आप, 16 मोलर से यानी 16 मोल्स पर लीटर से 8 मोल्स पर लीटर होने के लिए कितना टाइम लगेगा? टेल मी। अगेन 2 मिनट्स। ठीक है, सेम रिएक्टेंट है आपके पास। ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ 32 से 16 मोल्स पर लीटर हो गया। अब यही 16 को, इसके लिए आप इसको 2 मिनट लगा, इसी 16 को 8 होने के लिए कितना लगेगा? 2 मिनट्स। देन दिस 8 विल गेट कन्वर्टेड एंड इट विल गेट रिड्यूस्ड टू 4, अगेन इट विल टेक 2 मिनट्स। 4 से फिर 2 होने में 2 मिनट, फिर 2 से फिर 1 होने में 2 मिनट, फिर 1 से फिर 0.5 होने में 2 मिनट्स। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली 8 मोलर टू 4, it is going to take 2 minutes and so on। बात समझ में आ गई? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर एक हम नंबर लाइन बनाए, ओके, now let's suppose somewhere here is the 50%, okay, somewhere here is the 50%, so this is the concentration, और आप ये बोल सकते हैं this is the completion of reactant। यहाँ पे 50% reaction complete हो चुका है। now this is going to take, oh, sorry. So this whole thing is going to take how much? This whole thing is going to take t half। करेक्ट है बात? yes or no, please tell me। Yes, है ना? sir. और इस केस में इसको कितना लग रहा है? टी हाफ क्या है आपके पास? 2 मिनट है। ठीक है, अब यहां से यहाँ का आधा जो होगा इट विल बी समवेयर हियर, राइट, एंड दिस विल बी व्हाट? 75%। यस और नो? Yes. अब इसको कितना टाइम लगेगा? दिस वन विल टेक हाउ मच? अगेन 2 मिनट्स, है ना? Yes, कितना sir. टाइम लगेगा इसको फिर से? 2 मिनट्स। और यहाँ से फिर इसका आधा यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली विल बी द वैल्यू। अब यहाँ से फिर इसको यहाँ आने के लिए फिर से 2 मिनट। ठीक है, द मेन थिंग दैट यू हैव टू सी इज दैट, अब आप लोग ये बताइए, ये आपका 0% था टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। 0% से 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा बताइए? 4 minutes. 4 मिनट्स, है ना? और अगर हम टी हाफ के बारे में बात करें तो इट विल बी व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। yes or no? So I can write t 75% is equal to 2 into t half। all of you understood this? yes or no, please tell me। Yes, sir. पर नहीं लिखा तो उसको भी लिख लीजिए। This is a very important insight that you have to remember for the first order reactions। ठीक है, t half is equal to 0.693 upon k and it is independent of the initial concentration of the reactant।
All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है. अम्म, एक सवाल करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं. ठीक है. राइट अ क्वेश्चन. द हाफ लाइफ of a first order reaction अच्छा एक और चीज याद रखिएगा सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स द T हाफ. ओके. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 seconds. Calculate the time required. For number 1. Just a second. %75 completion. बताइए 75% के लिए कितना टाइम लग जाएगा? Tell me. Hanifa, Nawal and Rifat, please tell me. First order reaction के लिए T75% is equal to what? Is equal to क्या फॉर्मूला लिखा था अभी हमने? भाई बोलिए ना, आप लोग बोलते नहीं है, आप लोग बिल्कुल डरे रहते हैं यहाँ पे. बोलिए क्या फॉर्मूला लिखा था फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T75% is equal to अभी नहीं लिखा हम लोगों ने. हाय हाय जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए प्लीज. रिफत, हनीफा, नवाल, एनीवन? ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या आप लोग? डांट सुनिएगा. 2 times. 2 टाइम्स पूरा बोलिए साफ साफ. 2 times T half. हाँ 2 times T half. So this will be equal to 2 times. What is the T half? 60 seconds. 120 seconds. ठीक है, ये तो आसान था आपके पास. Now right, the second part is for 90% completion. कितना टाइम लगेगा आप लोग को? Now see here, for 90% completion आपके पास क्या क्या होना चाहिए था? You should have K, you should have A naught, you should have A, and you should have the time. Time तो आपको निकालना है. You don't know the time. You also don't know what is the rate constant here, right? Rate constant कहाँ से निकलेगा आपके पास? You know that T half is equal to 0.693 upon K. So K will be equal to 0.693 divided by T half, that is equal to 60 seconds. यहाँ से आपके पास K की वैल्यू निकल जाएगी. Yes or no, please tell me guys. Yes. Yes. जो भी K की वैल्यू निकलेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए you will calculate the time as 2.303 divided by whatever the value of K is multiplied by log of what will be the A naught? Tell me. A naught क्या होगा? 100. जोर से बोलिए. 100. 100. And what will be the A? 10. 90 कौन बोल रहा है? 90 नहीं होगा, 10 होगा. ठीक है, log 10 और 10 से देखिए 10 हो जाएगा बस यहाँ. ठीक है, this will be 2.303 divided by K. log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. That's it. Just need to calculate what is the value of K. K की वैल्यू को आप मत कैलकुलेट कीजिए, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे 2.303 divided by K is what? 0.693. यहाँ पे 0.693 into 60 ऊपर चल जाएगा तो it will be 60 like this. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बस आप लोग. बात आ गई समझ में? ये सोनो प्लीज मी. Yes. Yes. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे हमको जहां तक लगता है. ठीक है, यू कैन कैलकुलेट द टाइम लाइक दिस. कॉपी कीजिए इसको.
Please let me know when you're done.